फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello, and a very warm welcome to all our viewers to the Cricket Next YouTube channel. Day 2 खत्म हो चुका है इंडिया और इंग्लैंड के पहले टेस्ट का, and India has ended the day on 421 at the loss of 7 wickets, and some 7 wickets they were. We have been talking throughout the day about those 7 wickets. जिस तरीके से वो wickets गिरी, काफी interesting wickets थी, काफी interesting approach थी, so to say. But yeah, India lead by 175 runs as of now. कल जब वो बैटिंग रिज्यूम करेंगे, Ravindra, Jadeja and Axar Patel would be on crease. Jadeja is just 19 shy from yet another test century, and Axar Patel is looking good. 35 of just 62 balls. काफी कुछ हुआ आज के दिन में, काफी विकेट्स गिरी, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से विकेट्स गिरी और काफी अच्छे स्कोर्स भी हुए बैटर्स की तरफ से. तो इसी पर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ताउस रिजवी, सौम्य कपूर एंड सुरम्य कौशिक. Soumya, hi Taus, hi Suramya. What an interesting day of cricket. A day for India. India ने काफी अच्छा किया throughout the day, but उसी के साथ नहीं भी अच्छा किया क्योंकि काफी अच्छा और कर सकते थे. ये डिबेट चलती आ रही है सोशल मीडिया इससे भर गया. Me and Suramya we have discussed throughout the day how these wickets were. Taus भी थे, Taus से भी काफी डिस्कस किया. But Soumya, I पहले आपका टेक लेंगे क्योंकि आप पिछले दो लाइव्स में नहीं थे. कैसे देखते हैं आज के दिन को इंडिया की तरफ से? All in all, out and out. No, it's been a good day for India and for Ravindra Jadeja, but really disappointed with the way KL Rahul and Shreyas Iyer got out. You were set, you were looking good, and आप T20 नहीं खेल रहे हो यार, आप आखिरी दिन का मैच थोड़े खेल रहे हो. It's just second day, second session. You're just going after the bowlers. I understand there is an urge of hitting the spinners, but ठीक है, आप उस तरीके से खेलते हैं, आप उन शॉट्स में settled हैं, comfortable हैं. बट टेस्ट क्रिकेट इज नॉट अबाउट दैट. इतना ऊंचा मारा श्रेयस अय्यर, जस्ट एक प्लेयर बाहर था और सीधा हाथ में कैच दे दिया. सिमिलरली केएल राहुल गोइंग फॉर द स्लॉग, giving away his wicket. There was 100 for take to take, and he missed out another one. But a very good knock from Ravindra Jadeja under pressure. थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था वहाँ पे. आई वोंट से ट्रिकी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं शायद फंस सकती थी इंडियन टीम अगर वो उस तरीके का नॉक नहीं करते, स्पेशली आफ्टर द वे अश्विन गॉट आउट. वो एक फालतू का विकेट वी लॉस. सो शुड हैव उस लिहाज से बहुत एक अच्छा नॉक है. आई जस्ट होप ही गेट्स टू 100. डिसअपॉइंटेड श्रेयस यशस्वी डिडंट गेट 100, डिडंट गेट टू हिज टर्न, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद शुभमन गिल. आई मीन व्हाई इज ही इन दैट काइंड ऑफ जोन यार? आपके पास अभी 2 मैचेस हैं. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन. लाइक किस तरीके का शॉट, दैट इज योर गो टू शॉट और आप उस पर कैच दे रहे हो, वो भी मिड विकेट पे. आई मीन ridiculous. So on and on, very disappointed with the way Indian batters got out, but congratulations to Ravindra Jadeja for putting up that kind of a show with the bat, and we needed that kind of a performance from somebody, considering we don't have a Virat Kohli in the 11, and that is why Virat Kohli is such an important figure in that line. Yeah, exactly. And Taus, we were talking about Shikhar Bharat in the T session, T live. I post before T, the live that we did. 41 runs. Shikhar Bharat scored. He not that bad, but then again a great wicket to bat on. कैसे देखते हैं आप Shikhar Bharat की innings को? Very very crucial for himself first, rather than the team. I mean, उसके लिए बहुत important था क्योंकि अभी now he can continue or he can stake a claim in the next test. वेरी क्रूशियल इनिंग्स कंसिडरिंग लाइक आप एक टाइम पे आपने लीड नहीं ली थी तो आपकी जरूरत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी शिखर भरत की. एंड द वे ही बैटेड, इट वाज अ स्टर्बन नॉक, इट वाज अ ग्रिटी नॉक व्हिच वाज नीडेड ऑन दिस विकेट. बाय द वे, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस विकेट इज मे बी टर्निंग अ लॉट, बट दिस विकेट इज इजियर टू बैट ऑन क्योंकि बहुत आराम से आ रही है. एंड द वे दीज गाइज आर रिस्पॉन्डिंग, रिएक्टिंग टू द ईच एंड एवरी बॉल, इट सीम्स लाइक दे आर जस्ट एंजॉयिंग. मतलब ऐसा लग रहा नहीं है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई इश्यूज आ रहे हैं. तो बहुत आराम से विकेट भी गई जैसा आपने देखा, तो वो विकेट फेंका है, यहाँ पर लिया नहीं इंग्लैंड ने. एंड जो विकेट्स गई भी है वो आई बिलीव दैट इंस्टिंक्ट के ऊपर जो आप शॉट खेलते हैं ना, तो वो इंस्टिंक्ट उनको ओवरकम कर लिया और वो फोर्सफुली दे वेंट फॉर द शॉट्स. आई मीन ऐसा नहीं कि मिस्टेक किया है, उनको लग रहा था वो शॉट जाएगा मगर नहीं गया, व्हिच एंडेड इन कैचेस और बैड डिसमिसल्स.
But Shikhar Bharat, very important, crucial knock for him. Of course, Team India, it helps Team India definitely. I mean, and also something very interesting. Soumya is very disappointed despite India being 421 for 7 is a very good news for at least Team India कि हमारा expectations ज्यादा है और they should deliver like not just up to our expectations, वो खुद ही individual targets कर सकते थे, which is also the best part कि उन्होंने अपने 3 figure mark को prefer नहीं करके टीम के situation में उन्होंने वो किया कि हम डोमिनेट करेंगे, हम अग्रेसिव खेलने की कोशिश करेंगे, हम उनको चढ़ने नहीं देंगे. सो एक भी परसेप्शन ये नहीं आने दिया कि यार 100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या 3 फिगर मार्क. इन्होंने हर मोमेंट पे ये देखिए विच शोज 80 24 23 बैड शॉट्स खेले या आप कहेंगे इंस्टिंक्ट खेले, बट देन दे डिड नॉट let the record or the 3 figure mark come into their head, rather than they went for the intent or the intensity or maybe the instincts. So that is something which has delighted me, but overall it's a good day. यार 175 हमने सुबह प्रेडिक्ट किया था, so रम्या 150 Yeah. 175 Yes. Yes. यहाँ तक तो पहुंच गए. अभी और Yes. मतलब Yeah, रहना चाहिए yeah. आगे. But then Taus, अपनी 100 को ना प्रेफर करके टीम के कॉज को प्रेफर करना वो वाइट बॉल में ज्यादा देखा जाता है कि आप टीम टोटल आगे पहुंचा दे. बट टेस्ट क्रिकेट में आप जहां लंबी पारी खेल सकते हैं, 5 दिन का मैच है, डे 2 है, वहां पे आप अगर 86 पे मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक है मारिए, ये नहीं कह रहे कि आप शॉट्स नहीं मार सकते, छक्के भी मारने अलाउड है टेस्ट क्रिकेट में, जरूर मारिए, पर जिस तरीके से आउट हो रहे हैं वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैंस के लिए रहा है. और सुरम्या पे मैं इसी बात आऊंगा. सुरम्या वाज एंकरिंग द लास्ट लाइव विद इट. सुरम्या, आई लाइक टू हियर योर टेक ऑन द होल डे. इस तरीके के बैट्समैन से लेकर अश्विन तक जितने भी डिसमिसल्स हुए, इन माय टेक हर एक डिसमिसल इंक्लूडिंग शिखर भरत, अश्विन और ऊपर के जितने थे सब इंडिया ने प्लेटर में रख के इंग्लैंड को दिए हैं. आई डोंट थिंक इंग्लैंड earned any wicket from my side, but what's your take on this innings so far by the Indian team? No, it's been India's day. So to put it pretty much, on the lines that you mentioned and Taus mentioned earlier, that how we have given wickets to them, and especially if we talk about the top order, Yashasvi Jaiswal, the way he came in to bat today, and I would like to reiterate what Vineet mentioned, because Vineet's there in Hyderabad and he joined us live at that point of time. So Vineet mentioned that time that Yashasvi Jaiswal felt as if he's coming to bat at 76 odd runs. He didn't come out to bat as if he was in zero. And in Test cricket, when you come on the second day, you really have to start from the beginning. You have to start from the scratch. That didn't happen with Jaiswal, and that's how he got out. But kudos to Joe Root as well, the way he bowled, and it's actually very ironical that how England. Came with 3 spinners, but at the end of the day, you have Joe Root as the best bowler, which seems that there is something really, really big problem or problematic in your team. Because if Joe Root is taking wickets, if he is becoming the bowler who is taking crucial wickets, which means that there is some problem with your full-time bowlers. Now, talking about Shubman Gill, I think we talked about Gill at length in our previous shows. Taus was with me, kind of you were also with me, and we discussed at length that, a lot of issues are there with Shubman Gill, but on top of it, it's his mental state right now. It doesn't seem that he is in the right space. It seems that something is bothering him, something is eating him inside, because other than his mental state and mental space, everything is fine with him. It's just that he is so restless. It's just that he is not calm on crease when he is batting, and that's why all those things are happening. And perhaps that somewhere or the other he knows that when Virat Kohli will come in, he will be the only person to go out of this 11. So that's one thing that might be bothering Shubman Gill. Then KL Rahul, Shreyas, Iyer. We discussed about Rahul and Iyer at length, and if we look at this live session only, Soumya very well mentioned about what was the need for Rahul to go for that shot, what was the need for Shreyas Iyer to go for that shot. It seems that they really want to go by that aggressive style of batting. That kind of, I remember you and I were talking, and you said that it's not T20 cricket. It's not that you have to just go after the ball and score runs. You can settle down, you can take your time, and then go after the balls. So I think, yeah, that happened with KL Rahul, Shreyas Iyer, and we got to see 5 batters getting out in some way or the other similar style only, that aggressive shot style. But KS Bharat,
I don't know if you'll second with this thought or not, but I am pretty much impressed with KS Bharat, because the way he started, I wasn't even hoping him to cross that 40 odd runs, because it seemed that he wasn't that comfortable. He was taking his time, but good to know that he took his time and then he was actually building the innings with a Jadeja. And Jadeja, obviously, um, resilience is the one word that I would like to use in front of Jadeja. It's because of resilient Jadeja, India are at this comfortable position right now. And Jadeja has handled the innings pretty nicely, but unfortunate for Ashwin, just one run from the day. But let's see what happens tomorrow, because Axar is looking really well, and Axar and Jadeja are batting as if they are top order batters. So good to see. And I remember, just before the live session, the way Axar was going after those big shots, and Soumya was like, "Oh, why is he doing that? What is the need of going after these shots?" I think that's how we started to feel like, oh, please don't take any risks, because we don't want you to get out. We want you to stand there. We want you to build good innings. So I think Aksar and Jadeja are pretty much comfortable, and it has been all in all India's day, and looking forward to good session, first session, so to say, tomorrow. Yeah, and Soumya, you talked about Akshar and Jadeja, as Ramya is saying about the approach that Akshar was also taking, the shots that he was hitting. What are your thoughts on this partnership between the two lefties, the two all-rounders, Akshar and Jadeja, and what do you expect them first thing in the morning? What's the score that you expect Team India No, to reach? as I told you, it's a great partnership, and we needed something of that sort, especially after the way Ashwin got out. थोड़ा सा कहीं ना कहीं, because Jadeja का yes no call था वो. I won't put onus on him पूरी तरह, but वो एक mind में चलता है कहीं ना कहीं. And उसके बाद ये partnership आना was just amazing, and I just feel Axar again, he was doing the same thing that KL Rahul and Shreyas Iyer did, and they got out, they got dismissed. तो स्लॉक करने की जरूरत थी नहीं. ठीक है, आप 10-11 रन बना के चले भी गए तो क्या फर्क पड़ रहा है, अगर नहीं भी आते तो कुछ बदलता नहीं, आपके पास फिर भी 150 के ऊपर की लीड होती. तो आई थिंक दैट वाज समथिंग that wasn't required. But talking about the scores, I really want Jadeja to score 100 at least, and I'm looking forward for another 50, 60. I mean 30, 40 more to add, so that we can have a good lead of somewhere around 220, 225 probably, and that would be a great thing, because जिस तरीके की अब पिच खेलने लगी है, there are foot marks, पैचेस बन गए हैं जहाँ बॉल थोड़ा लो भी रह रहा है, टर्न भी ले रहा है, लो भी रह रहा है. So on those kind of situation conditions on the track, Axar himself and Ashwin can be very lethal. If you take a lead of around 225 or something of that, it can be a good lead, and we can go for we can try for an innings win as well. So yeah, just add on to that 175 as much as you can. Just bat out, make more marks, try and making more marks on the pitch, so that you get that turn, and वो uneven bounce जब start हो गया, and rest, three spinners, three world class spinners these are, and they can, they will be lethal in any given scenario. In these kind of conditions, they're just it's just going to be brutal. So yeah, I'm just looking forward to them. अगर बैटिंग की बात करूं, just go there, quickly score runs and stretch the lead. Yeah, and Taus, if you can sum up what's wrong with the England bowling lineup. I know they are inexperienced. I know they are all over the place. And some are comparing it to the 1993 England bowling lineup that came to India. Now, I don't know. Honestly, I don't know about that lineup. It was 5 years before I was born, and I have no idea. But you know best. You know best about this. Is it similar to that? And how bad is it? What's wrong? Where are they going wrong? These spinners, and including, if you can say, Mark Wood. I guess there's some technical issue from I'm Thousand. back. Yeah, I'm Thousand. back. Yeah. नहीं, so the thing what I'm finding here is जो हम issues जो हम बाहर जाके खेलते हैं, वो वही issues difficult हो रहा है उनके लिए. Can you hear me? I mean, there is some network error. Yeah, we can perfectly. इशू हम फेस करते हैं, ये वही इशू आके यहाँ पर फेस कर रहे हैं. इनफैक्ट, या हेलो, Yeah, you're audible. कैन आई कम बैक अगेन? No, you're audible. No, you're audible, Taus. या तो ये वही इशू हो रहा है. आई मीन ऑफ कोर्स इनएक्सपीरियंस इज वन ऑफ द रीजंस, एंड यहाँ पर दीज गाइज वर नॉट प्रिपेयर्ड. आप देखेंगे कि जो हमारे जो
इश्यूज जब हम फॉरेन में जाके खेलते हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर या बैटर्स है, वो वहां जाके स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। Here we have a lot of infrastructure. Here we have a lot of practice matches, opportunities to play. But वहां पर इंग्लैंड में साल में सिर्फ 6 महीने क्रिकेट होता है। तो आई मीन वेयर डू यू गेट द टाइम टू गेट दोज स्पिनर्स? और वहां की विकेट्स भी ग्रासी रहती है, कंडीशन भी फास्ट बॉलर्स के लिए रहता है। तो आप देखेंगे मोस्टली जब बॉलर्स रहेंगे वो एशियन, जो स्पिनर्स रहेंगे वो मोस्टली एशियन ओरिजिन के रहेंगे, चाहे मोइन अली हो या टॉप स्पिनर्स, या आपके आदिल रशीद हो, या ये शोएब बशीर, या यहाँ पर जो भी रेहान अहमद। It's rare that you might get a Graham Swan in some time in a decade, or maybe Ashley Giles। तो बहुत रेयर होता है कि उनकी जो ब्रीडिंग होती है वो फास्ट बॉलर्स की होती है, क्योंकि कंडीशंस वैसी हैं, दे हैव बीन बॉर्न एंड बॉट अप लाइक दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली उनको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। प्लेटफॉर्म इंग्लैंड ए टूर्स कितना होता है मुझे तो कुछ खास दिखता नहीं है। वाइल हमारे जो इंडियन A B C D साइड जो भी रहती है वो लगातार खेलते रहते हैं, चाहे ऑफ सीजन हो या सीजन में हो। क्योंकि आप अगर अगस्त में खेल रहे हैं और अगर बारिश हो रही है इस तरफ वेस्ट साइड में, तो साउथ में आप जाके खेलते हैं तो वहां पर कुछ ना चैलेंजर सीरीज हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ वी हैव अ पूल, ह्यूज पूल ऑफ टैलेंट। कहीं ना कहीं 140 करोड़ की जनता में से हमको मिल जाते हैं। उनके पास वहां पर लोग ही नहीं है खेलने के लिए, उनका क्रिकेट ही बहुत वीक है। उनके पास टैलेंट स्पिनर फास्ट बॉलर्स आपको मिलेंगे, मोस्टली स्पिनर्स नहीं है। तो कंपेयर करना, देखिए एक टाइम पे हुआ करता था, और स्पिनर्स कभी भी उनका स्ट्रेंथ नहीं रहे, बहुत रेयर रहे इंग्लैंड का, क्योंकि वो मोस्टली एशेज पे ही कंसंट्रेट करते हैं। या आप अगर ऑस्ट्रेलिया का भी देखेंगे तो बहुत रेयर, शेन वॉर्न जैसे टॉप स्पिनर आए हैं, या आप उंगलियों पे गिन लेंगे। नेथन लायन जो 400 तक पहुंचे। उसके बाद स्पिनर्स कौन है उनके पहले? बहुत रेयर है। आप रिसेंट जनरेशन में बोल रहा हूँ, लास्ट 2-3 सेंचुरीज में। बट आप इंडिया में देखेंगे तो लगातार स्पिनर्स एक के बाद एक आ रहे हैं। तो कंपैरिजन इन दोनों में करना बड़ा मुश्किल है, और इंडिया की एक्सपीरियंस लाइनअप अमेजिंग, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। आपको टप्पा ही नहीं मिल रहा है, आपको एग्जैक्टली कैसे गेंद करना है आपको पता ही नहीं, कहाँ पिच करना है, कौन सी लेंथ डालनी है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, एंड वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस से आता है। अगर आप शुरुआत कर दी होते प्रिपेयर करना, कि हमको एटलीस्ट 6 महीने पहले प्रिपेयर करना चाहिए, आपके जो स्पिनर्स है वो तैयार होने चाहिए। वो पहले एक दौर हुआ करता था, इंग्लैंड लायंस पहले ही आके करके जाती थी, जो रूट पहले अब यहाँ पर साइमल्टेनियसली इंग्लैंड लायंस की सीरीज चल रही है वहां पर कहीं पर, जहां पर सरफराज ने 100 मारा। सो दैट इज द थिंग। मतलब आपका समय नहीं है, आपके पास 100 है, आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, फिर उनका वो 50 ओवर क्रिकेट है, आपके पास फिर आपके बिग बैश लीग भी खेल रहे हैं, IPL भी खेल रहे हैं। तो समय नहीं है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए, Yeah, तो but यू डोंट no, हैव गुड Taus, क्वालिटी no, प्लेयर्स no, एट no. द Then Taus, please explain me this. I understand कि इतना समय नहीं है. Then why does a bowler like Joe Root, who hardly balls, is getting more एक्सपीरियंस। spin, is producing better balls than a bowler like Jack Leach, who is a more experienced spinner? ठीक है, इंडिया का experience नहीं है, but Jack Leach has bowled a lot of overs as a lead spinner. He's the spearhead of the spinning department. Why is Joe Root getting more wicket taking balls than Jack Leach? Is it lack of Because skill on? he's a gifted bowler, like how Sachin Tendulkar was. He could bowl off spin, he could bowl leg spin, he could bowl medium pace. Okay, he's a gifted bowler. Apart from that, this is his fourth tour to India, right? Joe Roots. While Jack Leach is more of a typical bowler. He left arm spinner है, वो ज़्यादा turn नहीं कर सकता. He is more like a Axar Patel, somebody who doesn't who lacks experience at least playing in India. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। जो रूट एग्जैक्टली नोज, और आप देखेंगे जो भी है, जो रूट परफेक्टली जो लाइन पे डाल रहे हैं, जो टप्पा रख रहे हैं, ही नोज एग्जैक्टली, ही नोज व्हाट one needs to do when to bowl, how to bowl in India. That is one of the reasons why Joe, and he's gifted also यार। आप तेंदुलकर को देखिए ना, कितना, I mean he's got some good match winning performances with the ball. So I mean he's gifted player, that's it। I mean, or he's got the experience. Joe Yeah, Root, yeah, and yes, Soumya. unfortunate that these frontline bowlers, Jack Leach and other guys, they are not able to, because they don't have experience. No, so here is another point. Okay, Joe Root ने जो भी किया ठीक है, but there's also a sense of stubbornness with Stokes and McCullum. आपने हार्टली को बॉल दिया, आई अंडरस्टैंड दैट। आप एक यंगस्टर को बैक करना, नॉट अ यंगस्टर, डेब्यूटेंट को बैक करना चाहते हो, आई अंडरस्टैंड दैट। बट जब आपके पास दूसरा बॉलर ही नहीं है, पेसर ही नहीं है, तो व्हाई नॉट अ जैक ली जो जनरली एक्सपीरियंस्ड है। आप जब वहाँ पे उसके पास परचेज हो सकता था तब आपने उसे बॉल नहीं दिया, देन यू अलाउड द इंडियन बैटर्स टू टेक द अपर हैंड।
अब आप स्ट्रगल कर रहे हो, अब आपको जैक लीच को भी समझ नहीं आ रहा टप्पा कहाँ पटकना है। जो रूट यस आई अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस है, लेकिन आज भी उन्होंने भी कोई कम रन नहीं दिए हैं। इफ आई जस्ट लुक एट द बॉलिंग कार्ड, तो उनके अगर आप उनका भी 3 के ऊपर का इकोनॉमी रेट है। 24 ओवर में 77 रन उन्होंने भी दिए। जैक लीच इज बेटर ना रन्स वाइज, ठीक है विकेट एक मिला है, लेकिन रन्स वाइज तो बेटर है ना। सो इट्स मोर ऑफ द स्टबर्ननेस दैट बेन स्टोक्स इज शोइंग विद हार्टले। उनको बॉल डलवाने के चक्कर में एट द कॉस्ट ऑफ जैक लीच दिस हैज कम अप, एंड दैट्स व्हाई दे हैव कंसीडर्ड अ लीड ऑफ 175, और ये और स्ट्रेच होगी बिकॉज द वे द टू बैटर्स आर बॉलिंग बैटिंग, उधर बॉलिंग अटैक उनको डोमिनेट ही नहीं कर पा रहा है। एक्सर एंड जाडेजा सेटल्ड इन अ वे कि उनको डोमिनेट नहीं कर पा रही इंग्लैंड बॉलिंग, आप किसी को भी दे दीजिए। So this was more about experience है, ठीक है, लेकिन this is also more about the stubbornness that Ben Stokes has shown in giving overs to Jack and Hartley. Yeah, absolutely. But then there has to be a reason. Both of them have bowled 25 overs. एक ने 131 रन दिए, एक ने सिर्फ 54 रन दिए. तो you can see the stark difference. कल जब डलवाना था तब आपने हार्टले को लगा दिया. That's the problem. हाँ, वो एग्जैक्टली और आज जब रूट फ्लो में थे उन्होंने रूट को हटा दिया. तो I'll end this live with this question to Suramya. Suramya, your thoughts on Ben Stokes' captaincy, the way he handled his bowlers, and then also your thoughts on the bowling lineup जिस तरीके की bowling इंग्लैंड ने की है. No, I'll speak in extension to what Soumya highlighted. There is stubbornness from Ben Stokes, definitely. Because, see, you didn't see Joe Root on day one, okay? You got Joe Root at the beginning of day two. Great, you got a wicket. 2 missed chances. Everybody knows that on the next ball, just at the next ball, there was a chance of a dismissal. That didn't happen. But then, just going once with Joe Root, then you again brought in Jack Leach, which means you're not backing a bowler. When a bowler is coming into his rhythm, you are not going with that bowler. So it breaks the flow of that bowler as well. Now, Soumya is right there. You have a debutant. You know that debutant is not working up to the mark. And you know that the Indian batters are targeting him. Still, you're again and again going back to that bowler. That is a massive loophole in the captaincy. And talking about bowling, I think it's pretty much obvious. If you look at the bowling, when Shreyas Iyer came in, it was pretty obvious that you'll go with Wood. That just happened. And, even Shreyas Iyer, he also knew that how when I'll come, I'll be getting a fast bowler. That's how obvious it has turned out to be. So it has been obvious and it has been pretty stubborn. As you mentioned about how Ben Stokes is rotating his bowlers, again all those decisions are looking as it's pre-decided, as it's pre-manual, that it's written somewhere that just after this bowler you'll have to use this bowler and this plan might work, but eventually that's not happening, and that's where England are losing the game over by over. Otherwise, if you could have gone with Joe Root in the beginning only, you might have got a couple of more wickets in the first session. So that's one. And I'm talking about Ben Stokes. Don't know whether it's pre-decided, whether they have some rigid plan at place, because it might be some teams do come with rigid plans regardless of what's happening on field. They stick to their plans only. So this might be a case. But yes, Ben Stokes' captaincy has been under the scanner in this 2-day test match so far, and it will be seen how it goes on day 3. Well, yeah, absolutely. Ben Stokes' captaincy will be under scanner throughout the series, the 5 matches. If he plays all the 5 matches, that is. But yeah, a day for India overall, good score, good lead, 175. They have to build on from here, and then probably bat once is what many fans are saying. कि एक ही batting करो और उनको थकाओ, जितना उनको भी बैटिंग बार बार करा के उनके कॉन्फिडेंस डाउन करा जा सकता है. बट या वील हैव टू वेट एंड सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर द इंडियन फैंस ऑन day 3. Thank you so much, Taos, Suramya and Soumya, for connecting with us, and thank you so much to all our viewers for connecting with us. Have a wonderful day. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.